So let us now revise the last chapter of our module 1, that is special aspects of audit in automated environment. बच्चों automated environment क्या होता है बताइए? It is a combination of what? People, process and technology. Combined together it is also called as what? Information systems and information technology. Correct है? So इसके अंदर अलग अलग layers होते हैं. वो layer कौन से हैं? First we talk about is the software or the applications. What are the different types of applications we see over here? Number one, we have the package software for the small businesses. Then we have is the small ERP for small to medium, and then we have the ERP systems from medium to large. But these softwares or these applications, they form one layer. Apart from that, do we have other layers also? Yes. See, other layers are what? The operating system, the network devices, storage system. Correct? And storage devices. Then we have physical and environmental systems. Correct? Yes. Then we go ahead and talk about is what is real-time environment. What is bachcho real-time environment? Real-time environment is the way where the transactions are initiated, recorded, processed, correct, and reported immediately without any delay. जैसा ट्रांजैक्शन हुआ वैसा क्या हो रहा है, वो अपने को immediately उसके रिजल्ट मिल रहे हैं. So what are the critical components for the real-time environment? So we have is what? Hardware. Then we have is what? Software or applications. Applications. Software नहीं बोलना. Hardware, applications, middleware and network. सही बात है. If any one of the component fails, will the real-time environment be operational? No. So therefore all of them are called as what? The critical IT components. Correct? Take them? Yes. Then we go ahead. Next we talk about is after this understanding and documenting the automated environment. So how are we supposed to understand? हम लोग ने कैसे अंदर गए थे? So क्या बोलकर करना था? डायग्राम बनाया था अपन ने उसका. जी बोलिए. So first we have to understand what? टोपोलॉजी का एग्जांपल दिया था. So we have to understand what? The structure. करेक्ट है ना? उस स्ट्रक्चर में अंदर जाके अपने को क्या पढ़ना है? Applications. Second, policies. Third, come on, think. Structure, policies, applications. Then, come on, बोलते क्यों नहीं हो? इंफ्रा आईटी स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद क्या? उसके पॉलिसीज प्रोसीजर हो गया, फिर क्या? उसके रिस्क एंड कंट्रोल्स. सही बात है ना? सो वापस एक बार अच्छे से बोलो कि क्या क्या चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? द इंफ्रास्ट्रक्चर. करेक्ट है ना? उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सिस्टम्स है उसमें जो लगे हुए गए वो क्या है? एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस के बाद क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रिस्क एंड कंसर्न्स, एंड फिर उसके ऊपर अपने आईटी कंट्रोल्स. करेक्ट एकदम? बोलो एनीवन एनी डिफिकल्टी? नो. उसके बाद व्हाट आर द थ्री फेजेस इन द ऑडिट साइकिल? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन. बोलो ना वापस एक बार. प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन. सो प्लानिंग में पूरा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे. करेक्ट है ना? फिर उसके बाद कंप्लीशन में क्या, सॉरी एग्जीक्यूशन में क्या होगा? We will test the impact of those controls on our nature, timing and extent. And last में at completion में क्या करना है अपने को? We will evaluate those deficiencies through what? Data analytics and computer assisted audit techniques. करेक्ट है? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम? ऑन पीरियोडिक बेसिस वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, mitigate the risk and again review. Why this assumes importance in today's age? Because with the advancement of what? With the advancement of technology, new risks comes into picture. Correct? Therefore it is essential that we do what is risk management. Then we go at different types of risk. What is risk? The possibility that something wrong can happen. Correct. Then we go ahead and we talk about is what? The risk assessment procedure. What is the risk assessment procedure over here? चलो एकदम अच्छे से देख के बोलो, कोई टेंशन नहीं है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज व्हाट? फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर व्हाट? द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. दैट मींस व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल्स यू हैव पुट इन प्लेस एंड व्हाट इज द number of controls you have put in place. How many number of controls and the type of controls. There we talk about is qualitative and quantitative. Qualitative, quantitative के बाद each of those controls should have what? The key performance and the risk indicators. Correct है ना? Qualitative and quantitative. What quality of controls? That is a type of controls. Quantitative, how much controls have you put in place?
Then these controls, okay, quality and quantity, but what is their performance as well as the risk indicators, correct? Then we talk about is, okay, risk indicators and what is a risk appetite. Then फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको ग्रिड बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, स्कोर्स, स्केल्स, मैप्स, ये सब बनाते हैं, एंड देन वी सेट व्हाट इज द बेंचमार्किंग, करेक्ट एकदम, यस. देन द टिपिकल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा क्या है, बोलो एक बार फिर से. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, की परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंडिकेटर्स, रिस्क एपेटाइट, रिस्क स्कोर्स, मैप्स, क्या बोलते हैं, स्केल्स एंड मैट्रिक्स. देन वी विल प्लेस व्हाट, बेंचमार्क्स. Typical risk assessment procedure is what apna? What is the objective? What is the thing that impacts you to achieve those objectives? Assess the likelihood of fitness and then you respond. Correct है? Then there are three types of risk. ये जो last important है, इस chapter में बाकी कुछ नहीं, यही important है. बोलो, so कौन से risk आ सकती है? एक entity level, फिर एक application level और last में क्या कहता है? At each particular layer. So उसके लिए 3 controls है अपने. कौन से? General, फिर उसके बाद है एप्लीकेशन एंड आईटी डिपेंडेंट. जनरल कंट्रोल्स आर एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी लेवल कंट्रोल्स विच सपोर्ट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स. करेक्ट है ना? बोलो यस और नो. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट कंट्रोल्स और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स? इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. सो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स आर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज pervasive controls. Correct एकदम? Yes. खत्म. Then we discussed its example. Then we have application controls. Application controls are the controls which are included or embodied where? In the application systems. Correct है ना? So application systems alone, can it be beneficial? No. To support their effective functioning we need what? General IT controls. Then we have is what, the IT dependent, also called as what, IT dependent manual controls, in which what happens, the systems gives us the report and based on those reports generated by the system the manual controls are exercised. Correct? Okay. Then we have the evaluating of the risk. There are two types of controls, entity level controls and process level controls. Entity level controls applicable throughout the organization, but in entity level controls there are two types of controls. Number one is direct entity level controls and another is indirect entity level controls. Correct na? Direct entity level controls, they monitor the controls for their effective functioning actively. Correct? For example, internal audit, business performance. Indirect entity level controls like code of conduct, they indirectly monitor the effectiveness of the internal controls. Process level controls is what controls? लास्ट पॉइंट है अपना प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स. फटाफट खत्म करो उसको. क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस, द बिजनेस प्रोसेस, द ईच स्टेप थ्रू विच द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. एट ईच ऑफ दो स्टेप्स व्हाट इज इन प्लेस? द एंटिटीज कंट्रोल्स आर इन प्लेस. दोज आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स. दैट्स इट, खलास हो गया. डेटा एनालिटिक्स इज व्हाट? अरेंजिंग द डेटा and deriving a meaningful information out of it is nothing but called as what? Data analytics. Khalas. That's it. That is what is chapter special aspects of audit in automated environment. Easy ekdam? Yes, perfect. So thank you very much guys. See you tomorrow. Tomorrow we start with a new chapter, that is audit of banks.